Actually changed earlier in the day. We were not able to notify to everybody promptly and in a timely manner, and I sincerely apologize for the inconvenience this caused. We're extremely blessed and grateful to have your support. We've gone through a bit of a challenge in putting on this show, but the fact that all of you came here is just reward enough, and it makes everything worth the while. So without any further ado, I'd like Ryan to come here and start this session. Thank you. Hi, I'm Ryan Winkle, project coordinator for Highlight Arts, and I'd like to begin and end everything with an apology. So I'm also sorry. And I'm sure I will apologize again later for something. So we're here at the Lower Literary Festival, and it's absolutely fantastic to be here. So I'd like to just thank the whole team from the Lower Literary Festival for having us. We're really excited about it. When we started doing this work, I've been working with my co-producer, Dan Gorman, who's over there. And these amazing poets to make the event and this book that you see here. And it wouldn't have been impossible without the help of the British Council, who had the idea of pairing poets from Lahore and Glasgow a year and a half ago, and helped us bring all these guys together at Sangi Meal Publications. And I can't thank them enough for that. It's been an amazing experience, and I thank all the poets you see here today, as well as the musicians. Are really thankful for the opportunity and the experiences they've had, and I hope they can share some of those with you today. And they will share those with you today. I also want to thank Ali Kamran from Sangi Meal Publications, who helped make this book. And I'd like to ask him up to the stage to just say a few words about this book which we're launching tonight, which is available at the Sangi Meal bookstore outside. Buy your copy. I think it's 500 rupees. 30% less than any other book you can buy. It's in English and Urdu, and we love it, and I hope you will too. But please, I'd just like to get Ali up here, our friend Ali Kamran from Sangi Meal Publications, to say a few words. Assalamu alaikum and hello, ladies and gentlemen. मेरा नाम अली कामरान है और मेरा ताल्लुक संगीत पब्लिकेशन से है। और संगीत पब्लिकेशन से ताल्लुक रखते हुए हम सबसे ज़्यादा फख्र महसूस करते हैं उर्दू ज़बान पे, उर्दू के शायरों पे, उर्दू के अदीबों पे, जिनको कि हमने छापा या जिनको हम छापने के ख्वाहिशमंद हैं। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि डैन और रायन ने इस प्रोजेक्ट को किताबी शक्ल में छापने की उससे ख्वाहिश जाहिर की और नतीजा आपके सामने। तो over to you, Ryan. Remember me? Thanks, Ali. I don't know what he said. So if I repeat anything he said, forgive me. That's my second apology, I guess. Tonight we're going to hear from many voices. It's going to be a really jam-packed event. We're really lucky to be here thanks to the support of the British Council and the Edinburgh International Book Festival. And I'd like you to help me welcome everybody to the stage. What you're going to see tonight, actually before I do that I should say, what you're going to see tonight are poets working in translation and musicians working in collaboration between Lahore and Glasgow, Scotland. Now, the way we work is basically we take these fine people, these artists, and we put them in a room together, and we basically lock them up. We lock them up. We give them lots of coffee and really strong chai, and for about 6-7 hours a day, they work together, and they get to do something that you don't very often get to do with another poet. They look at each other's poems, and they turn to the other person and they say, "What do you mean
what does this mean? I don't understand this. What are you talking about? And one poet will explain it to the other poet, and it's the responsibility of the other poet to change and turn it into something that works in English or in Urdu. So what you're going to hear are kind of versions of both poems, in Urdu and in English. And to me, they have a lot of heart, a lot of intimacy, a lot of empathy, and I think you're going to see a lot of that on stage tonight. So I'm not going to say any more about it, other than to remind you to buy this book. It's called The Change in the Light, and it's beautiful. Light. Is that what I said, light? Yes. Let's welcome to the stage our friends, Afshan, Sajjad, Akbar, Natiq, Gerry, Cambridge, Carruth, Khalid, John, Kishwar, Naheed, there she is, and Vicki, husband. Chairs are not so many. Well, there's a chair right here. He is the one. We're missing one. Kishwar. Please, again, Kishwar, right? Just keep it going until she gets there. Please, just continue the applause. A few whoops, maybe a whoop. That's what she was waiting for, really. It wasn't the chairs. So, there's going to be a lot of movement on the stage. Hopefully it'll all go totally according to plan, but as we've discovered, that doesn't always happen. So I'll be here to kind of guide things, and it'll be fun, but there might be a little bit of organized chaos, so bear with us. The first poet who's going to speak is our friend Gerry Cambridge from Glasgow. Please give Gerry a big round of applause. Thanks very much, and it's fantastic to be here in Lahore for the first time ever at this festival. So many thanks to everybody. First poem I'm going to read is a love poem. It's about being in love with someone who lives very far away, and it's called Hearing Astronomers Speak. And it's about listening to a talk by astronomers and being introduced to astronomical realities. There is nothing to explain in it. The pane in it is P-A-N-E, so it's a pane of glass, as in a window. And in Glasgow as well, there's a reference to Christmas lights in Glasgow. In Glasgow, in various parts of the city, near Christmas, they put Christmas lights and nets across some of the buildings. So that's what the reference is there. Hearing astronomers speak. Hearing astronomers speak. I remember the lowering sun is only our local star, shining through the window on a winter afternoon. Each long, fierce orange ray, fittingly strange, born as it is, from the death of other stars, on unimaginable timescales, in which some other consciousness, perhaps so light, make nothing of a pain, as mine does now. And the sun's going down is only the earth's slow, enormous whirling round, all its bodies, cities, cars, massively curving into the dark. It sparks out constellations like the nets of Christmas lights in Glasgow, though not lit in celebration, but simply because they are. Multitudinous slow bees in the hives of space for the mind's cold honey that make me shiver and long for your warm, bare back and your heart below my hand in bed, beating steadily and more frail through these ungraspable stellar distances. And your faces star. And I'd like to ask up to the stage to read a translation of this Afshan Sajjad. So big round of applause for Afshan.
नज़्म का उन्वान है फल्कियात और मैं। फलकदम की बातें मैं सुनता हूँ जब, याद आता है मुझको कि सूरज अगर ढल रहा है तो संग संग इसके हम भी तो ढलने लगे हैं। हमारे मकामी सितारे की मानिंद इस सर्द सी सहपहर में ये खिड़की से यूं झांकता है कि इसकी अजबतर ये नारंगी किरणें किसी और तारे के मरने से बनती हों जैसे। रवा वक्त के तेज धारे तसव्वुर में कब आ सके हैं, जहां पर कहीं और की होशमंदी नहीं देख पाती है उस रोशनी को, उस दर्द से जिससे मैं देखता हूँ। सूरज का ढलना, ज़मीं का बड़े जोर से घूम जाना, जिस्मों को, शहरों को और गाड़ियों को अंधेरे नगर में डबोने लगा है। यहीं पर चमकते हैं वो कुमकुमे जो क्रिसमस के मौके पे लटके हुए जाल से झांकते हैं। ग्लासगो में सितारों के झुरमट की मानिंद नहीं, जश्न कोई नहीं है। यूं लगता है जैसे शहद की अनगिनत सुस्त रौ मक्खियां हैं जो उस शहद को ढूंढती हैं खलाओं के जंबूर खाने में जो जहन पर जम रहा है। कांप जाता हूँ मैं और तरसता हूँ कितना तुम्हारी बरहना कमर को, तुम्हारे धड़कते हुए दिल को महसूस करने को। तहे दस्त अपने बिस्तर के अंदर जो यकसा धड़कता है, कमज़ोर पड़ जाता हूँ बेकरार फासलों से जिन्हें पार करना ही मुमकिन नहीं है। और इससे परे एक सितारा सा चेहरा तुम्हारा। My next poem is from a sequence. It's called Light Leaves, and it's a father poem. It's about something that happened after my father died in 2010, when I found a model train set that he built in a cupboard in the house. When I was a wee boy, he would try and get me excited and interested in model trains and seeing them going round and round endlessly on the track. But I was much more interested in wild birds and ornithology. So that's all you need to know about this point. From Light Leaves. My father's toy trains were his birds. Down the years, as we grew, the models got smaller. Finally, he was down to the smallest size they made to fit the space he was left with. Mini gauge, dainty wee things. Even I could admire their fine engineering, their primary colours, their unexpected heft for things so small. Reassuringly solid. Round and round they went with a buzz through the miniature land he'd fashioned, fitted with little bushes, trees, and look, dip this oil in the tiny funnel and the train would puff out smoke. I find it here, that made-up stab at a perfect world, a destination of finished care. And to read the translation of this, I would like to ask Dr. Khalid Jan. Gerry Carruth की ये नज़्म लाइट लीव्स, ये एक बेटे की उस मोहब्बत को जाहिर करती है जो उसके दिल में उसके बाप के लिए है। और उसका बाप दुनिया से चला गया है, लेकिन अपने पीछे एक छोटा सा खिलौना छोड़ गया है ट्रेन की शक्ल में, और वो बेटा देखता है और उसे बाप की याद आती है। मैंने इस नज़्म का उन्वान रखा है रोशनी जो रूठ गई। मेरे बाप की खिलौना नुमा रेलगाड़ियां
उसके अपने तख़य्युल का शाहकार थी। वक्त के साथ हम बड़े होते गए और इन छोटी गाड़ियों के मॉडल और छोटे होते गए, यहां तक वो अपने साइज के सबसे छोटे हिस्से में सिमट गए। फिर भी वो इतने दिल फरेब थे कि मैं उनकी हसीन सन्नाई, खूबसूरत बुनियादी रंगों और हैरान कुन भारी वजन को फख्री अंदाज में महसूस कर सकता था। वो खिलौना नुमा रेलगाड़ियां हल्की हल्की सीटी बजाते हुए इस छोटे से ट्रैक पर चक्कर लगा रही थी जो मेरे बाप ने उनके लिए बनाया था, जिस पर जा बजा छोटी छोटी गाड़ियां और दरख्त बनाकर उन्हें एक खास शक्ल दी गई थी। वो रेलगाड़ियां यादों के तेल से चलते हुए धुएं के मरगुले छोड़ रही थी। यूं लगता था जैसे उन्होंने एक आइडियल दुनिया के सीने में खंजर घोंप दिया हो, वो दुनिया जो मेरे बाप की मंजिल मकसूद थी। Thank you very much. My final poem is called That Dusk. I live in a sort of converted hayloft, which has got very large windows in it. And this is just about something that happened one evening. In Scotland we get incredible sunsets sometimes. This caused Kishwar Naheed, who did the translation of this, to call me a surrealist poet, which I don't think I've ever been called before and probably will never be again. That dusk. The whole vast West, if that's for me, Afshan, tell whoever it is I'm not available at the moment. Side phone, side. Okay. That dusk. The whole vast West was a pink astonishment. Everything in the room was pink. Everything answered it. Everything was silent, yet it seemed the room and all it held grew animated, excited by that great, when all is said, day's last exhalation at the world's edge. In the bathroom too, everything answered to pink. The white ceramic, the towels, the bath and sink, the whole house glowing and burnished. It stopped me a minute. It plucked me out of my everyday concerns to look through the wide window of the skyline, bright and hushed. Before, sure and slow, it faded, and the pink radiance left wall and cup and table, and I could turn back without guilt to my small matters. And I'd like to invite Kishwar Naheed up to read her translation of this book. ये नज़म बहुत मुश्किल थी और इसे मैंने चैलेंज समझ के पूरा किया। असल में ट्रांसलेशन तो ट्रांसक्रिएशन होती है। हम आपस में बैठ के एक दूसरे की फिक्र पे सोच करते थे, इसका मतलब ये हुआ, तुम्हारी जुबान में ये हुआ, तो हमारी जुबान में ये हुआ, तो फिर शायरी में यूँ हुआ, यूँ करके एक नज़म को ठीक करने में, नया बनाने में 2, 2.5, 3 दिन तो बिल्कुल लग जाते थे। उस तरीके से हमने ये नज़म जो पढ़ी है, ये नज़म बहुत सुरलिस्टिक है, तवील भी है, सुरलिस्टिक है, तो इसको ट्रांसलेशन करना बड़ा मुश्किल था। तुम लोग सुनोगे तो तुम्हें भी अंदाजा हो जाएगा। पूरा मगरबी आसमान गुलाबी हैरत में डूबा हुआ था। कमरे की हर चीज गुलाबी हो रही थी, हर चीज खामोश थी, फिर भी लगता था कमरा उठ के उनकी तमाम अशिया जिंदा होकर इस रोशनी में जज्बाती हो रही है। वो सब कुछ कह देने को दिन का आखिरी सुरमई शाम दुनिया के आखिरी किनारे पे ठहरा हुआ है। अरे उस खाने में भी हर चीज में गुलाबी रंग ठहरा हुआ है। ओ सफेद पत्थरों में, तौलियों में,
नहाने और धोने के सिंक में सारा घर गुलाबी में ऐसा नहाया हुआ था जैसे किसी ने अपने हाथों से इन्हें संवारा हो। इस मंजर ने मुझे एक लम्हे के लिए रोका। उसने मुझे रोजमर्रा की फजूलियात से निकाला कि मैं खुली खिड़की से चमकती हुई गुजर जाऊं, उफ़क़ की रोशनी को अपने अंदर जज्ब कर सकूं। गुलाबी दीवारें, चाय के कप, मेज और मुझे छोड़कर चली जाएं, बगैर किसी एहसास जुर्म के जो मेरे अंदर छोटी छोटी बातों पे तूफान बन जाया करते थे। तुम्हारे कदम सामने के दरवाजे से कच्चे कंकरों पर, फिर सामने के लॉन में और भी चमकते हुए मालूम होता है कि ये कदम जा रहे हैं। टेलीग्राफ तारों में और उससे ज़्यादा हाथ से बनाई हुई दुनिया से गुजरकर ये मंजर बहुत पुरलुत्फ लगता है। अपने वजूद को लहराते हुए और हवा से लिपट कर चल रहे हैं, फिर अपने मुस्तरिब पंजों से अपने सरों को भी खुजलाते हैं। मुझे यकीन है तुमने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा होगा, मगर फौरन भी पहचान जाते हो। ये अपने वजूद में मोटे ताज़े हैं। ये अपने वजूद में मोटे ताज़े नहीं बल्कि मखमल में लिपटे हुए वजूद हैं जो चमकते तांबे, जैतूनी, फिरोजी, दूधिया रंगों में नहाए हुए हैं। इनकी गर्दनों में जाफरानी रंग झलक रहा है। बस ये सब के सब हवा में लहराते हुए चल रहे हैं। बस एक लम्हे में सब के सब मिलकर हो जाते हैं और तुम्हारे सरों पर फड़फड़ाते हुए उड़ जाते हैं। ये कहाँ जाते हैं? ये मतलब कहाँ से आए थे? ये इतने खूबसूरत रंग और नज़ारे तुम्हें हैरत में डूबा छोड़कर चले जाते हैं और बाकी सारे दिन तुम्हारे अंदर उनके परों की मखमली सरसराहट कभी फुदकते हुए और कभी एक लाइन में चलते हुए और चहचहाते हुए महसूस होती है। शुक्रिया। Gerry Cambridge, everybody. Thanks so much to him. Next, so the Scottish poets are going to read maybe 3 or 4 poems each, but obviously we want to make sure that all our friends from Pakistan also get to read some of their poems, and you get to hear some of the English translations of those Urdu poems. So we're going to welcome back Kishwar to read a couple of her own poems translated by Vicki Husband. So, how's everybody doing? We're just going to find the text in a minute. It's a very new book. We just got it yesterday. So, we haven't had that much time to live with it yet. Wow. Here we go. We found them. Kishwar Naheed. This is the way. Which one? Reading your book. आज मैंने तुम्हारा कोट पहना था। आज मैंने तुम्हारा कोट पहना था ये देखने कि क्या मेरे कंधे भी ये कोट पहनकर खुद को ही अजीज समझने लगते हैं। मैंने तुम्हारे कोट की जेब में हाथ डाले ये देखने कि वो जो राज जो तुम मुझसे छुपा कर रखते थे वो निकाल कर देख लूं और पढ़ लूं। वो सारे फ़ोन नंबर, वो सारे पते, वो सारी चाबियाँ, वो सारे नाम मैंने हवा की नोटबुक में लिख दिए कि आजकल तो लोग मकान, फ़ोन और नाम सभी बहुत जल्द बदल लेते हैं। Wearing your coat. I tried on your oh so heavy coat to test whether a woman can shoulder the weight of wool like a man.
I dug my hands into your pockets to know what secrets you buried, and wasn't surprised to find a little black book and keys to all your lives. I threw them away, already knowing that you use your woman like loose change. What is the... ये नज़्म जो जिसको ट्रांसलेट विकी ने किया है ज़वाले इस्तेसाल, ये मैंने कोई आज से 40 बरस पहले लिखी थी। और नज़्म ये है कि हम औरतें घरों में काम करती हैं, बर्तन साफ करती हैं, पहले बर्तन साफ करती हैं, फिर उसकी कालक उतारने को कपड़े धोती हैं, फिर इस्त्री करती हैं, ये सब कुछ करती हैं। कभी ये होश नहीं होता कि हम देखें हमारे हाथों का क्या हाल हुआ है। इसी को देखते हुए इस पे ये नज़्म लिखी है, उसका नाम है ज़वाले इस्तेसाल। ये हाथ जिनमें रगे उबर कर खिज़ां की आमद की नामा पर हैं, रगे जभी यूं तपिश सदा थी कि जैसे सयाद आग बेआब मछलियों की तरह हो बेकर। ये हाथ उठे नहीं दुआ को, ये हाथ हस्ते तलब की सूरत कहीं सुबक्सर नहीं हुए हैं। ये हाथ अपनी ही आरज़ुओं के मैं फिर पढ़ती हूँ। ये हाथ अपनी आरज़ुओं के कातिल नाखुदा रहे हैं। ये हाथ के जिनकी उंगलियों में मुशक्क़तों के अज़ाब में हर ग्रह को चुपटा बना दिया है। एक नाखून में शिकस्ता साहिल की शक्ल में बदनुमाई का आईना बना है। ये मेरे अच्छे दिनों की तस्वीरें इब्तिदा है। Working hands. Once our hands moved with grace, like fish shoaling through water, flames through air. Now they are creased as unironed laundry, folded many times, fidget in our laps like leaves in the fall. They have served well, even though knuckles are pummeled, nails ridged like limpet shells. These hands have never been used to beg, so ignore the looks on others' faces when they catch sight of our working tools. Don't pocket your hands, let them speak, they have much more to say. Thank you, Kishwar and Vicki. As you can imagine, moving 10 artists around the planet is slightly complicated, and sometimes things don't always work out as we planned. So the next bit of the program, we're just going to read a poem from our friend Catherine Sowerby, who unfortunately, she lives in Glasgow and she couldn't make it here today. We're sad to miss her. She was translated in Glasgow. We went to Glasgow's Celtic Connections, who were really supportive of this project as well last year. And unfortunately, during that project, our friend Ali Natiq, he couldn't make it either because of visa problems, which unfortunately, for the kind of work that we've been doing, is kind of common. So we're really glad to meet him here. So Ali's going to read his translation of Principles of Engineering, but we're going to give you the English first. So that's going to be read by our friend Gerry Cambridge. This poem's called Principles of Engineering, and it's quite short. Butterflies adorn mountains and valleys, flapping like hinges. Gifts exchanged at funerals preserve age and origins. Our hands, pulled away from our bodies, resemble music, but heavier, rounded, like boats moulded by water. And Ali Akbar Natiq is going to come up and read his version of this. मैं
इस नज़्म को मैंने ट्रांसलेट तो किया है, लेकिन ये इतनी मुश्किल और मुबहम नज़्म है कि मुझे हैरत होती है कि इन्होंने दूसरी जो मैंने ट्रांसलेट की थी वो क्यों नहीं की और उस पर क्यों। मैं खुद परेशान हूँ, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की है इसकी ट्रांसलेशन करने में, अगर कुछ हाथ आ जाए हमारे। इसका शुमार है इंजीनियरिंग के उसूल। तितलियाँ, पहाड़ों और वादियों की खूबसूरती, तितलियाँ पहाड़ों और वादियों की खूबसूरती कलाबे की मानंद उड़ाती हैं। तहाइफ जनाजे पर दिए गए, तहाइफ जनाजे पर दिए गए, उम्र को महफूज रखते हुए। हमारे हाथ हमारे से खींचते हुए मौसीकी की तरह, और लेकिन भारी, हमारे हाथ हमारे से खींचते हुए मौसीकी की मानंद, लेकिन भारी, और गोल कश्तियों की मानंद पानी की लहरों को चीरते हुए। यानी ये जो हाथ हैं ये बढ़ते हैं मौसीकी की लहरों की तरह, पानियों में जैसे चप्पू किश्तियों का हटाता है पानी। तो ये बहुत ही एक अभान की नज़्म है। तो बहरहाल ये मैंने जो हो सका पूछ लिया। And now Ali will read another poem. It's called Migration. ये मेरी अपनी नज़्म है, इसका नाम हिजरत, जो उन्होंने ट्रांसलेट की है। तो ये है कि साइबेरिया से परिंदे यहाँ आते हैं और यहाँ शिकारी उनको शिकार कर लेते हैं। और ये ऐसे ही है कि जैसे यहाँ से महाजर किसी और मुल्कों में जाएं, सीरिया या दूसरे मुल्कों पे, और वहाँ पे जाकर वो शिकार हो जाएं, यानी ज़िंदगी की दौड़ में ज़िंदगी हासिल करने का और मौत का शिकार हो जाएं। चढ़ आया जब काफ नगर पर सूरज लश्कर, चढ़ आया जब काफ नगर पर लश्कर सर्द हवाओं का, सूरज धुंध में लिपटे नेज़े लेकर दक्कन भाग गया। पसपा होते देख के उसको पंछी दूर पहाड़ों के, देश पर आए हिजरत करके बस्ती बस्ती फैल गए। पतली गर्दन वाली कूंजें उड़ते उड़ते शाम ढले, मेरे गांव के पश्चिम में झील किनारे आ बैठी। पतली गर्दन वाली कूंजें उड़ते उड़ते शाम ढले, मेरे गांव के पश्चिम में झील किनारे आ बैठी। सूरज डूब रहा था और शफक पर सोना बिखरा था, सूरज डूब रहा था और शफक पर सोना बिखरा था। ऐसे में एक जाल लिए बेनाम शिकारी आ पहुंचा, घात लगाकर मासूमों पर उसने एक तकबीर कही। जीने की उम्मीद लिए जो ऊंचे सर्द पहाड़ों से, उड़ते उड़ते मेरे वतन में 100-100 डारें आई थी। तेज श्वाओं की धरती ने उनको सचमुच रात किया। Migration. As winter blasts lay siege to the beauty of their home, birds of the faraway mountains witnessed the retreat of the sun, who gathered up its warmth and snuck south. They followed behind, drawn by the light it promised. Hundreds of flocks scattered as seeds on a foreign land. One flock came to us through the last rays of the day, slender neck geese landing on the banks of the lake, silhouettes backlit by a sunset over distant mountains. A stranger turned up soon after with his trapper's net, eyeing up his prey, wishing himself the luck of the hunt. These birds that had flown from snow-bound mountains
thousands arriving in our village, hoping for safe haven, were scorched to cinders by the sun they sought to find. That was Jim Carruth, who you'll be hearing more of in a moment. Those translations were done via the modern miracle of Skype. Technology making events happen and also ruining events. Should we have a little musical interlude now? Would you like a little music? Yeah, a little music? Yes. You guys mind? Yes. Yeah, come on, you came a long way. These are our friends Sarah Hayes from Glasgow and Sarah Katzme from Lahore. And they're going to be doing 3 sets tonight, so 3 different songs. This is their first number. Oh, we need a chair for you. Hi everybody. It's really lovely to be here. This is my first time in Lahore. So we're going to play the music that we put together last May in Glasgow. So this first piece begins with a tune I'm going to play on the flute. It's originally to be played on the pipes, and it's called MacGregor of Roar. I learned it from a really good friend of mine who plays the fiddle. And she's from the Isle of Skye, which is kind of northwest island in Scotland. So Sarah will tell you a little bit about the other part to this piece. Assalamualaikum. ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਇੱਕ ਫੋਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੀਮ ਰੱਖੀ ਸੀ ਫੋਕ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਵਣ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦਰੀਸ ਇੱਕ ਨਾਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਟ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ बसे हुण नी हड़ा वसे ओ
Azmi and Sarah Hayes, everybody. They'll be back in a few minutes. Our next poet, you've seen her with Kishwar, and she's going to read some of her poems. It's our friend Vicki Husband. Thank you. It's a great honour to be reading here at the Lahore Literary Festival. Thank you all for coming to this. This first poem is about a Saturday night in Glasgow. In the city centre these days, the police patrol the city centre on horseback for any trouble. And it looks quite incongruous in the modern city to see these horses. So this is called What Do the Horses Think? What do the horses think on a Saturday night in Glasgow, walking the trough-like alleys, shadows saddled with luminous riders? Drawing the city in draughts through their nostrils, they sift for the heat of crime, the creature scent of humans, the reek of waste. Ears swivel to catch the lone song of a drunk, wild call of the pack, first tremor of a stampede. Passers-by may think they've imagined these shapes or conjured them from the past. Horseshoes ringing on cobbles, echo off steel trees, vertical lakes of glass. Do they fantasize of clover fields, nose bags, blue skies and sweated miles? Or later, safely stabled, will they relive the night, steering a baying crowd into sticky pens, ghost-drawn carriages? And I'd like to invite Kishwar to read the version. आज सुबह के एक सेशन में जहरा आपा, मैं और नवान बैठे थे और मौजूद था जदीद नज़्म की रिवायत, और वो लोग इस मौजू को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, गज़ल पे ले आते थे। आपको इन नज़्मों से ये अंदाज़ा होगा कि जदीद नज़्म की रिवायत कहाँ कहाँ पहुँचती है। मसलन ये नज़्म जो विकी ने पढ़ी है, ये इसका उन्वान ही अजीब है। घोड़े क्या सोचते हैं? अब घोड़े सोचते हैं, हमें तो पता नहीं चला था, कभी भी नहीं पता था। और जिस रोमांटिसिज्म के साथ और जिस खूबसूरती के साथ और जिस मोहब्बत के साथ और बारीक बीनी के साथ ये नज़्म लिखी गई है, तुम्हें सुन के मजा आएगा। क्या बात है, घोड़े सोचते। ग्लासगो में हफ्ते की रात को गलियों सायों में रवा दवा ये तम तराक वाले घर वाले सवार होकर सैर को आते हैं। हमारे यहाँ लाहौर में तो होता था। घोड़े भी अपने नथनों से महसूस कर लेते हैं कि जुर्म कहाँ हो रहा है। What interesting, महसूस कर लेते हैं कि जुर्म कहाँ हो रहा है। वो तो इंसान की निकलती हुई तेज खुशबू को अपने अंदर उतार लेते हैं। घोड़े अपने अंदर शराबी के अकेलेपन में गाए हुए गीत को अपने कानों को हिलाते हुए महसूस कर लेते हैं। लोगों के वहशियाना फिक्रे सुनते हैं। इस बेहोशी के आलम में एक दूसरे पर गिरते पड़ते गुजरते हुए लोगों को देखते हैं और गुजरते हैं। साथ में गुजरने वाले सोचते होंगे कि इन तमाम लोगों ने या तो तसव्वुर कर लिया है या गुजरे हुए माजी की नकल उतार रहे हैं। घोड़े अपने नाल ऐसे बजाते हैं जैसे लोहे के दरख्त हिल रहे हो। ये लाइन कितनी खूबसूरत है, जैसे लोहे के दरख्त हिल रहे हो, या फिर शीशे की लहर जो उफकी तौर पर बह रही हो। क्या घोड़े हरे भरे खेतों का सोचकर अपने नथने फैला रहे हैं? नीले आसमान और खुशबूदार फैले नीलों का तस्वर करके वो तमाम मंजिल से आगे पहुंच जाते हैं। क्या वो फिर ऐसे ही सफर की तमन्ना करेंगे? इस तरह कि जो जुनून के मजमे से गुजरते हुए मैं खानों और सबीलों से याद दिलाती है कि माजी में कैसी कैसी बगियां इन्हीं गलियों और बाजारों से गुजरा करती थी। वाह। This next poem is called On Being Observed. When I woke up, she asked me what I'd been smiling at as I slept. Was it Dashunts, she said.
No, I replied. I'm pretty sure it was a dream about organisational change at work. The treads of the steps to our office grew narrower, and we all had to wear smaller shoes. But the smiling, she asked. Oh, I was probably just being polite. And I'd like to invite Afshan, Sajjad to read her version. ये एक मुख्तसर सी नज़्म है और ये सब नज़में आज़ाद नज़में हैं, लेकिन मुझे आदत है पाबंद सूरत में तर्जुमा करने की, तो एक कोशिश है। नज़्म का मैंने नाम रखा है ज़ेर निगरानी। सुबह को जब मैं जागता हूँ वो पूछती है तुम सोते में क्यों हंसते हो, क्या ये उनके बारे में है कुत्ते जो खिलौना लगते हैं। वो पूछती है, मैं कहता हूँ ये ख्वाब था दफ्तर की तब्दीलियों पर मबनी, आहट कदमों की सीढ़ियों पर तंग होती है, तंग करती है, जूते छोटे पड़ जाते हैं, पर हंसते क्यों हो ये तो कहो। ओह वो शायद मैं शाइस्ता कुछ ज़्यादा हूँ। शुक्रिया। In Glasgow, the skyline is dominated by high-rise blocks of flats which were built in the 60s. And people have mixed views of them. A lot of people felt they didn't have a sense of community, but they were people's homes, and now they're coming to the end of their functional life. A lot of them are being demolished. So they blow them up with explosives. So this last poem is about watching a high-rise block of flats being demolished, being brought down, and it's called A Long-Held View. At the last moment it hesitates, or rather we do, to brace a small part of ourselves which still believes in certainty, suspend a long-held view of skylines that dates back to the longevity of hills. Anticipating foundations being rocked, we rush to shock-absorb the soul. And when the raising starts, it's thankfully slow, as if to let us down gently. First, air warm as eggs casts its heat. Rooms release their light. The shell creaks a little before sky rivers in. A cloud of dust mushrooms up like proving dough. Concrete gives a grunt, then the whole falters, apologetic almost before sauntering apart. Pictures of pop stars and dogs and green ladies jump their frames. Calendars slip from pins, loosing a hive of empty boxes. Ceiling roses impress into laminate boards, weighted by 20 floors, flat packing themselves, walls defenestrating, doors slammed thin. And a rain of nails prized free from soft beds makes sweet timpani with concrete slabs. And all the iron knitting unravels like stories, like stories, like stories. I'd like to invite Dr. Khalid to read his version. Thank you. Thank you, Vicki. Vicki husband की ये नज़्म जो उन्होंने भी बताया कि एक बड़ी बिल्डिंग के गिरने का मंजर है, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बयान किया कि जब उसको धमाके से गिराया जाता है तो उसकी जुजियात को बयान किया है, किस तरह उसका लोहा बाहर निकलता है, किस तरह तस्वीरें गिरती हैं। तो एक बिल्डिंग को एक जानदार जैसे कुछ चीज़ है उससे तशरीह दी गई है, बड़ी खूबसूरत नज़्म है। और उसका उन्वान जो मैंने रखा है, एक देर तक नजर आने वाला मंजर। आखिरी लम्हों में बिल्डिंग को गिरने में हिचकिचाहट थी, या शायद हमारे ज़हन के किसी गोशे को जो अभी तक चीज़ों को दायमी समझता है। और उफ़क़ पर देर तक नजर आने वाले मंजर को पहाड़ों की तवील उम्री की तरह देखता है, और बुनियादों के उखड़ने के अमल को अपनी रूह में कबूल करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता गिरती हुई इमारत को इस तरह महसूस करता है जैसे
हम खुद आहिस्ता आहिस्ता मुनहदिम हो रहे हों। जैसे अंडा टूटते हुए गर्म हवा खारिज करता है, इस तरह गिरती हुई इमारत में कमरे अपनी हवा और रोशनी बाहर फेंकने लगते हैं और इमारत में दरारें आसमान पर दरियाओं की तरह नमूदार होने लगती हैं। गिरदोगवार का एक बादल खमीरी डबल रोटी की शक्ल इख्तियार कर लेता है और कंक्रीट टूटने से पहले एक माजरत खाना आवाज निकालता है। पॉप स्टार्स, कुत्तों और ग्रीन लेडीज की तस्वीर अपने अपने फ्रेमों से निकलकर भागने लगती हैं। दीवारों पर लगे कैलेंडरों के कील अपने शहद की मक्खी जैसे घरों को खाली डब्बों की शक्ल में छोड़कर भागने लगते हैं। छत पर बने फूल बूटे एक लैमिनेटेड बोर्ड की तरह 20 मंजिलों के बोझ से एकदम दब जाती हैं। दीवारें खिड़कियों से और खिड़कियां दीवार से बाहर फेंकी जाने लगती हैं और दरवाजे चिपक कर रह जाते हैं। फिर जैसे नाखूनों की एक बारिश सी होने लगती है जो अपनी बुनियादों से उखड़ते हुए कंक्रीट के तख्तों के साथ एक मौसीकी सी बजाने लगते हैं और लोहे के जाल मंजिल दर मंजिल और कहानियों की तरह एक दूसरे से अलहदा होने लगते हैं। शुक्रिया। Thanks to Vicki and everybody who translated those poems. Up next, we have our friend Afshan read one of her poems. ये मेरी अपनी नज़्म है और एक नहर जो हमारे शहर में बह रही है और जो हमारे शहर की खूबसूरती है और जिससे हम सबको बहुत प्यार है, उसको उसकी जो अब हालत ज़ार है उसे देखकर उसके गम में ये नज़्म लिखी गई है। इसका नाम है हुस्ने दियार। समंदर गाड़ियों का शहर की सड़कों पे इस तरह रवां रहता है जैसे एक लम्हे को भी ठहरा तो हमेशा के लिए रुक जाएगा। हर एक जानिब से मोटरसाइकिलें, रेड़े, बसें, रिक्शे उमड़ते आ रहे हैं। गो कई सड़कों की तौसी हो चुकी है, बेशुमार अशजार अपनी जान देकर भी ट्रैफिक के समंदर के लिए रास्ता बनाने से रहे कासिर। इसी बेसिम बेहंगाम मजमे के लिए सड़कों के उलझे जाल में जल्लो सिराए विंड तलक एक नहर बहती है, कभी जो इस्तारा थी मोहब्बत का, कभी जो इस्तारा थी मोहब्बत का, जहां उल्फत भरी रूहें मुसर्रत आफरी रुत में सफर आगाज करती थीं। बहुत ही पुरसुकून माहौल में सारी फजाएं फूल, कलियों और रंगीन तितलियों से झिलमिलाती थीं। इनायत वक्त की अब आईने में सिर्फ अपनी शक्ल ही ऐसी नहीं जो अजनबी है, नहर भी पहचान से बाहर हुई है। शहर भर की गंदगी, कूड़ा गली कूचों का, फुजला कारखानों का इसी पानी में बहता है। इसी पानी में नामालूम मकतूलों की लाशें बह के आती हैं। गधों, घोड़ों को, गाय भैंस को इस नहर में नहलाया जाता है। मुताफन पानियों में शहर के गर्मी ज़दा बच्चे भी इनके साथ तैराकी के फन में ताक होना सीखते हैं। पुल से छलांगे लगाते हैं, यही पानी निगलते हैं, यहीं पर डुबकियां खाते हैं। देखो तो धुएं से गाड़ियों के इसके ऊपर तीरगी सी छा रही है। गंदगी के बोझ से और आसमां के अक्स से पानी का इसके रंग काला है। नई पीढ़ी की नजरों में तो शायद
ये भी नाला है। देखो तो धुएं से गाड़ियों के इसके ऊपर तीरगी सी चाल रही है। गंदगी के बोझ से और आसमां के अक्स से पानी का इसके रंग काला है। नई पीढ़ी की नजरों में तो शायद ये भी नाला है। हमारी नस्ल की यादों में लेकिन इसके हरियाले किनारों, नीलगू अफलाक पे छाई घटाओं, नर्म रौ धारों की हर एक मौज दाखिल है और इसके रोने वालों में मेरा भी नाम शामिल है। बहुत शुक्रिया। Now I invite Jim Carruth to translate my poem. Thank you. One of the many things that Glasgow and Lahore have in common is that we probably don't spend enough time looking after our beautiful places. Beauty of Lahore. Incessant, the sea of motor cars floods these city streets, as though to stop for a second would halt its tides forever. Waves of motorcycles, rickshaws, buses overflow the roads. Trees, martyred to the cause of wider lanes, have died in vain. Smothered by the traffic, strangled by tarmac, between Jallow and Rewind lies the silent canal. Once couples strolled on its banks hand in hand, journeys flourishing among flutterings and blooms. Time changes our own faces beyond recognition. No different for a canal that takes what people cast away. Factory waste, garbage, nameless corpses float in its waters. Horses, donkeys, buffaloes, cows, children too seek refuge from summer's intense heat to bathe, swim, drink it in. Look at its wreath in fumes, its dark and dirty murk. To this generation, it is nothing more than a drain. But others still remember when its banks were green, the sky clear, the water sparkle in a lover's eye. To the list of those who miss that most, I add my name. Why did you say wow, wow? Let's welcome back Sarah and Sarah. बुल्ले दी एक नज़म है, काफ़ी है सॉरी नज़मा दी गल हो रही काफ़ी है बुल्ले शायरी जिदे जेह्ड़ी उल्टे ज़माने की गल हो रही है तो जानवरों की गल आ रही है कि कां जेह्ड़े ने वो इकट्ठे होके लग्गड़ नूं मारन लगदे ने और चिड़ियां जेह्ड़े ने उन्होंने जुड़ के जुर्रियां नूं ढा लिया है तो किवें वो एक जिहड़ी असीं गल कीती सी असीं इकट्ठे डिस्कवर किया कि बहुत जानवरों के राही बहुत गल्लां होंदियां ने खास तौर पर फोक और नेचर के नाल एक खास तरह का रिश्ता है तो अपनी नज़म जिहड़ी उन्हां दी ओहदे बारे आप बात करेंगे. So I apologise if I repeat anything that Sarah just said. So the song that I've put with Sarah's has it kind of uses the bird and animal imagery that appears in quite a lot of folk song. In particular, usually birds, or quite often when birds crop up in folk songs, I know they're kind of observing or commenting on the action. And in this one, we get to hear a little bit about their own lives, which is quite interesting. So there's a hawk, a crow, a pied wagtail, a thrush and a wren, and they're all kind of gossiping in the hedgerow about their love lives.
सजन दे आई
पहले मैंने हमारे दोस्तों की जो लिखी हुई थी पोएम्स उनको ट्रांसलेट किया। अब मैं अपनी एक नज़्म पेश कर रहा हूँ और ये नज़्म कुछ हवालों से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हवाला भी बता दो ना। और चूँकि ये आमरीत के खिलाफ लिखी गई जदोजहद के ज़माने में और जिसकी लिखने पे हमारे ऊपर तशद्दुद हुआ, टांगे बाजू तोड़े गए, जलावतनी और सारी चीज़ें हुई और बहुत से लोगों ने इसको पढ़ा और इसको एक पोएम ऑफ रेजिस्टेंस के तौर पे भी जाना जाता है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी पढ़ती नहीं, इसको अपनी पसंदीदा नज़्म करार देती नहीं और बाद में वो लोग भी पढ़ते रहे जिनके खिलाफ लिखी गई। मैं बागी हूँ। 10 अप्रैल 1986 में जब लाहौर आई थी तो उन्होंने इस दौर के रस्म रवाजों से, उन तख्तों से, उन ताजों से, इस दौर के रस्म रवाजों से, उन तख्तों से, उन ताजों से जो जुल्म की कोख से जलते हैं, इंसानी खून से पलते हैं, जो नफरत की बुनियादें हैं और खूनी खेत की खातें हैं। मैं बागी हूं, मैं बागी हूं, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। और वो जिनके होंठ की जुम्बश से, वो जिनकी आंख की लर्जिश से कानून बदलते रहते हैं और मुजरम पलते रहते हैं। वो जिनके होंठ की जुम्बश से, वो जिनकी आंख की लर्जिश से कानून बदलते रहते हैं और मुजरम पलते रहते हैं। उन चोरों के सरदारों से, इंसाफ के पहरेदारों से मैं बागी हूं, मैं बागी हूं, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। और जो औरत को नचवाते हैं, बाजार की जिन्स बनाते हैं, फिर उसकी इस्मत के गम में तहरीकें भी चलवाते हैं। जो औरत को नचवाते हैं, बाजार की जिन्स बनाते हैं, फिर उसकी इस्मत के गम में तहरीकें भी चलवाते हैं। उन जालिम और बदकारों से, बाजार के उन मेहमारों से मैं बागी हूं, मैं बागी हूं, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। और जो कौम के गम में रोते हैं और कौम की दौलत ढोते हैं, जो कौम के गम में रोते हैं और कौम की दौलत ढोते हैं, वो महलों में जो रहते हैं और बात गरीब की कहते हैं। उन धोखेबाज लुटेरों से, सरदारों और वडेरों से मैं बागी हूं, मैं बागी हूं, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। और मजहब के जो व्यापारी हैं, वो सबसे बड़ी बीमारी है। बहुत अच्छे। मजहब के जो व्यापारी हैं, ये 35 साल पहले की नज्म है, लेकिन आज वक्त ने इन लोगों के चेहरों से निकाल उठा। मजहब के जो व्यापारी हैं, वो सबसे बड़ी बीमारी है। वो जिनके सिवा सब काफिर हैं, जो दीन का हर्फ आखिर हैं। उन झूठे और मक्कारों से, मजहब के ठेकेदारों से मैं बागी हूं, मैं बागी हूं, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। और जहां सांसों पर ताजीरें हैं, जहां बिगड़ी हुई तकदीरें हैं, जातों के घोरक धंधे हैं, जहां नफरत के ये फंदे हैं, सोचों की ऐसी पस्ती से, इस जुल्म की गंदी पस्ती से मैं बागी हूं, मैं बागी हूं, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। और आखिरी बात है कि मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पर जुल्म का फंदा है। मैं मरने से कब डरता हूं, मैं मौत की खातिर जिंदा हूं। मेरे खून का सूरज चमकेगा तो बच्चा बच्चा बोलेगा मैं बागी हूं, मैं बागी हूं, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो, जो चाहे मुझ पर। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इस नज़्म के लिए I would request Jim Carruth, who has translated
this poem and translate it very beautifully. I request him to come and present the translation. Yes, full of that. Some poems have to be written. All poems bear a cost. I am a rebel. Against those who burden us with rules and choke our lives like fields of thorns, those offspring from an evil mother born who work our lands to bloodied pools, I am a rebel. I am a rebel. Bring on all the pain you have for me. Against those whose slightest move of lip or eye blink turn crime into their cause, then with everything within their grip they set to make and break the laws. I am a rebel. I am a rebel. Bring on all the pain you have for me. Against those who treat every woman like a prostitute to be bought and sold, but talk of the respect they have for them. For those evil ones, the lies they've told, I am a rebel. I am a rebel. Bring on all the pain you have for me. Against those who trade on our religion, who shape the faith for selfish goals, a disease that elevates their own role as always right, while all the others sin. I am a rebel. I am a rebel. Bring on all the pain you have for me. Against those who cry for our nation's cure, but plunder its wealth and make it worse, who live in palaces but talk of the poor, the liars, leaders, landlords of our curse. I am a rebel. I am a rebel. Bring on all the pain you have for me. Against those who chain your very breath, create conflict through caste and creed, put the noose of hate around my neck, silence my voice in this land of greed. I am a rebel. I am a rebel. Bring on all the pain you have for me. I wave the flag of justice always in my hand, though on unlawful gallows I will hang, ready for my fate. I'm not afraid to die. The martyr's sun will shine and every child cry, I am a rebel. I am a rebel. Bring on all the pain you have for me. Dr. John and Carruth, what a pair. I really wish we had more time so we could do more of the original Urdu texts and the incredible translations these guys have done. I absolutely love hearing them. But we decided when we went to Scotland last year and did gigs in Glasgow and in London that our guests from Pakistan would be presented as the bulk of the performances, and that we would give the same honor to our Scottish guests here. So if you want to hear more of the original Urdu, I recommend you go back in time and visit us in Glasgow and London last year. It was really good. It was really good. Or if you don't have a time machine, for just 500 rupees, you can get a copy of this book. And it's almost the same thing, but not quite. Is there a video? Is there a video of our performances? Is there a video, Dan? Some videos up on YouTube. There are some videos on YouTube. We will share the ones that we have on our Facebook page, and you can like us. How's that sound? Yeah. I'll do that this evening or first thing tomorrow. Our final poet for the evening is our good friend, Jim Carruth. He's going to read you some of his poems. A slightly quieter poem. This is a poem written during and about the last month of my mother's life. And she worked on a farm her whole life. And when you know a parent's going to die, you want to ask them questions that you've never asked them. Capture memories that you've always wanted to capture from them. And this is
This is about that. It's called Mother Harvest. Mother, forgive me these last 2 visits. Before it is too late, I have come to support again your painful shuffle, as if barefoot over a stubble field. To harvest your every smile, your love for others, your hope for all our futures. To gather in each precious word, stack more carefully in my heart bar your deep tone of casual conversation. Seep your half-forgotten memories in mine. The child sprouting from nursery clay, the adult on the hill working the seasons. All these and more I must reap to feed the hunger in my remaining winters. These rushed short days with you, bringing in the bales before the rain. Like Afshan people. हर नस्ल, हर ज़बान और हर खित्ते के लोगों में माँ की मोहब्बत सांझी है, और ये जिनकी नज़्म मुझे अपने दिल से बहुत करीब महसूस होती है, और मुझे यकीन है कि आपको भी पसंद आएगी, क्योंकि इसमें हमें अपनी माँ का अक्स नज़र आता है। इसका उन्वान है फसल जैसी माँ। मुझे माफ़ कर दे मेरी माँ कि अब तुझसे मिलने के दिन आखिरी हैं। मुझे माफ़ कर दे मेरी माँ कि अब तुझसे मिलने के दिन आखिरी हैं, मगर इससे पहले कि ताख़ीर हो जाए मैं आ गया हूँ, थकन से भरे तेरे कदमों को आराम देने। तमाम उम्र ही तूने तय की हैं दुश्वार राहें, इकट्ठा करूँगा तेरी मुस्कुराहट नए आने वाले दिनों में, हर एक के लिए तेरी उम्मीद तेरी मोहब्बत। मैं रखूँगा सब तेरे अल्फाज गोदाम में अपने दिल के छुपा कर। तेरा गहरा लहजा कि जिसमें तू करती रही बात सबसे, मुझे दे दे माँ अपनी आधी फरामोश करदा वो यादें। तू उभरी है छोटे से कस्बे की मिट्टी से, मजबूत इतनी कि सहती रही सख्तियाँ मौसमों की। मैं ये सब रखूँगा करीब अपनी जान के, इसी से मिटाऊँगा मैं भूख अपनी सरमा के मौसम में। हमारी रफ़ाकत के दिन मुख्तसर हो चले हैं, सरे खेत फसलों के गट्ठे चुने जा रहे हैं, बारिश के खुलकर बरसने से पहले। The next poem is a poem from my father's childhood, and it's the end of a harvest day, and all the neighbouring farmers are in a cart and they're on their way home, and it's just about the passing of time. Black cart. The stoop building had finished early that day, so all of us jumped a lift from the miller's big cart, discarding thin shirts in a pile behind the driver. Harvest's favourite sons, bronzed in body, we stood at the back shouting on passers-by, toasting our handiwork with sickly warm beer. Under a big sky, Johnny sang something coarse and we belled along, proud of our own voices, confident of tomorrows, as if we owned the sun. Some, cursing an old Clydesdale slow rhythm, raced ahead of the cart, impatient for the ceilidh, while others stayed on through a sunset's glow. Beyond Hare Law, the mare laboured on the brae, strained on its breast strap. The dray shuddered, and empty bottles rolled across its wooden floor. Boards stained with the dry blood of dead beasts. We crouched down quick, clung on to the sides, felt then a first shiver, and reached for our shirts. Passing those unmarked crossings and road ends, the horse slowed on its journey but never stopped. So Johnny, his song long silent, must have slipped off, unnoticed, and the others too, when their time came, like orchards ripe fruit,
dropped soft to the ground, disappeared fast down dirt tracks and narrow lanes. Those of us that remained pulled our knees up tight, our thin joints stiffening in the moonlit glint of sickle, or whispers drifting away on a winnowing breeze. Storm clouds rolled in to snuff out every dead star, until there was just me, huddled by the driver's back, the darkest mile left to go, and too late for the dance. Kishwar, for translation. जिनका खानदान जो है वो ज़राई पेशा है, ज़राअत का काम करते हैं, तो उसी के हवाले से ये नज़्म है। और वो लोग जो थर पार कर मेरी तरह गए हुए हों तो उनको अंदाज़ा होगा कि बहुत से लोग ट्रक में भर के आते हैं सुबह और शाम को काम करने के बाद फिर उसी तरह भर के चले जाते हैं। तो ये काला छकड़ा वो हमारी तरह का ही काला छकड़ा है। अब जबकि इस दिन फसल की कटाई जल्दी खत्म हो गई थी, हम सब खेत मजदूरों ने छलांग लगाई और ठेकेदार की बड़ी गाड़ी में सवार हो गए और सब ने अपनी पतली कमीजें ड्राइवर के पीछे ढेर कर दी। फसल के दुलारे बेटे जिनकी तांबे जैसी जिद चमक रही थी, खुशी के आलम में शोर बजा रहे थे। हम पीछे खड़े हुए राह चलते मुसाफिरों पे फिक्रेबाजी भी कर रहे थे। हमारे हाथ में गर्म, मैंने कभी तो नहीं पढ़ा जा रहा क्योंकि ये फिक्रा ही ऐसा है। हमारे हाथ में गर्म बियर थी। हमारे हाथ में गर्म बियर थी, मगर खुशी के मारे हम उसका भी मजा ले रहे थे। आसमान के वसी मंजरनामे के नीचे जाली ने अपनी बद्दी आवाज में गाना शुरू किया। हम भी फखरी अंदाज में उसका साथ देने लगे कि हम पे ये जरूरी था कि सोचते थे कि जैसे भी सूरज हमारा था, हम में से कुछ लोग बेचारे बूढ़े घोड़े की सुस्त रफ्तारी पे फिक्रेबाजी भी कर रहे थे। कुछ लोग तो खुशी में छकड़े के आगे आगे रक्स करते चल रहे थे। बाकी लोग गुरूब होते हुए सूरज की सुनहरी किरणों को अपने अंदर जज्ब कर रहे थे। बारिलों के ढलान से उतरने के बाद पसीने में नहाए हुए घोड़े ने अंगड़ाई ली। बियर की खाली बोतलें छकड़े के खाली फर्श पर लुढ़कने लगी। बोतलें थी, ध्यान रखिएगा। बियर की खाली बोतलें छकड़े के खाली फर्श पर लुढ़कने लगी। एक छकड़े में मुर्दार वहशी जानवरों के खून के धब्बे पहले ही लगे हुए थे। हमने जल्दी से पहलू बदला, दूसरी सिंध सिमट कर अब ऐसे लगा जैसे सारे जिस्म में फुहरी सी फैल गई हो। हमने जल्दी जल्दी अपनी कमीजें पहन ली। हम बेचैन होकर सड़कों और मोड़ों से गुजरते हुए हरचंद घोड़े की रफ्तार मंदम हो गई थी, मगर वो रुका नहीं। जाने का गीत भी खामोशी में बदल गया था कि वो उतर गया। इसी तरह बाकी लोग ऐसे ही आगे आगे उतरते गए, जैसे बाग में पके हुए फल खुद ब खुद बेआवाज गिर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बारी बारी सारे खेत मजदूर मट्टी में भरे रास्तों कच्ची गलियों में गायब होते चले गए। तकरीबन हम बाकी रह जाने वालों ने अपनी अपनी घुटने सीधे किए, जैसे हम अब करने वाले हैं। हम बाकी रह जाने वालों ने अपने अपने घुटने सीधे किए। हमारी पतली पतली घुटनों की हड्डियां मैली चांदनी में नुमाया नजर आ रही थी। हमारी सरगोशियां भी फसल की कटाई की उड़ती हवा में मुंदमिल होती जा रही थी। तूफानी बादलों ने टिमटिमाते सितारों को उस वक्त तक ढके रखा जब तक मैं और सिर्फ मैं ड्राइवर की कमर से चिपका हुआ था। अंधेरे सफर इख्तिताम हुआ, मगर अब रक्स करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी।
हाँ, मैं आखिर में यही बताना चाहती हूँ कि हमारी नज़में कुछ रिवायत के पास से, कुछ रिवायत से हटी हुई हैं, लेकिन इनकी नज़में मुख्तलिफ मौज़ूआत और मुख्तलिफ सब्जेक्ट और मुख्तलिफ तरमीहात को लिए हुए हैं। इस वर्कशॉप का मतलब ये था कि हम ये समझ सकें कि हमारे अंदर भी ये चीज़ें सोई हुई हैं और इनको भी ये एहसास हो कि कुछ जज्बे हैं जो इन्हें भी अपने अंदर जगाने हैं। बहुत शुक्रिया जय मरियम का कि भाई आप लोगों ने ये वर्कशॉप वहाँ की और यहाँ आके उसको दोहराया। इंशाल्लाह इस तरह के सिलसिले होते रहेंगे। और शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। The last poem is about freedom of speech. Was that your thank you? This is an encore. This poem is called Field Holler, after the chants of American slaves, and it's very much about freedom of speech, and I think the message is universal. Field Holler. Today I stand in a field and shout. It is good to stand in a field and shout, to stand somewhere you can call your own, somewhere you can find a place, somewhere you can find a space, somewhere you can call home and shout. Today I stand up in my field and shout, and others will stand up in their fields and shout. I am not alone in wanting a place called home I can stand in and shout. I shout for some cannot hear, I shout for some will not listen. I stand up and shout because each voice is important. Each must be heard, each given a chance to stand up and shout. In their own language, their own voice, their own field. Fence and hedge will not keep out forever those who do not want you to stand up and shout, only want you to sing their song. So we'll come in, take your shout, take your field. I will not yield to them, but add each lost voice to mine. Today, in my small field, I stand up and shout. Thank you. I'd like to invite Dr. Khalid to read his translation. जिन कैरथ की ये नज़्म फील्ड होलर, ये जैसे किसान अपने खेत में खड़े होकर हंकारा लगाते हैं जानवरों से, अपनी फसल को बचाने के लिए, परिंदों से, तो ये एक आवाज़ है, एक बज़ाहिर एक खेत के अंदर, लेकिन ये एक इनकलाबी की आवाज़ है। मुझे ये इसलिए बहुत पसंद है कि ये नज़्म उसी रंग में लिखी गई है जो मैं अपनी उर्दू में शायरी करता हूँ। मैंने इसका उन्वान रखा है हंकारा। आज मैं अपने मैदान में खड़ा चिल्ला रहा हूँ, क्योंकि अपने अपने मैदान में खड़े होकर बोलना ही बेहतर होता है। कोई ऐसी जगह जिसे आप अपनी कह सकें, जहां पांव धरने का मौका मिल जाए, जहां वक्त से मुखातब होना मुमकिन हो, या जिसे आप अपना घर कह सकें, वहां अपनी आवाज बुलंद करना जरूरी है। आज मैं अपने मैदान में खड़ा होकर अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर रहा हूं। जल्द ही दूसरे लोग भी अपने अपने मैदानों से पुकारेंगे, अपनी छोटी सी दुनिया के हसूल के लिए। पुकारी जाने वाली आवाजों में आज मैं तन्हा नहीं हूं। आज मैं उनके लिए भी आवाज बुलंद कर रहा हूं जिन्हें इसकी खबर ही नहीं, और उनके सामने भी जो ये आवाज सुनना ही नहीं चाहते। लेकिन मैं अपनी आवाज बुलंद करता रहूंगा, क्योंकि हर आवाज अहम है, जिसे सुनना, समझना और मौका देना होगा।
कि वो अपने अपने मैदान और अपनी अपनी जुबान से बुलंद होती रहे। कोई बाढ़, कोई झाड़ी इन आवाजों को रोक नहीं सकती। वो जो नहीं चाहते कि तुम उठ खड़े हो जाओ और अपनी आवाज बुलंद करो, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम अगर अपनी जुबान खोलो तो सिर्फ उनके गीत गाओ। फिर वो तुम्हारे घर में दरअंदाजी करेंगे और घर के साथ साथ तुम्हारी आवाज पर भी कब्जा कर लेंगे। लेकिन मैं इन्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा, बल्कि हर छीनी गई आवाज को अपनी आवाज में शामिल करूंगा। आज मैं अपने छोटे से मैदान में खड़ा होकर अपनी आवाज सबके लिए बुलंद कर रहा हूं। शुक्रिया। Jim Carruth, Dr. John. Guys, we're going to have one last song before we go out into the beautiful night. Thank you very much for staying a little bit late with us. We've been having a really great time. One last warm round of applause for our friends Sarah and Sarah. Thank you very much. This last song puts together some themes of weaving and also some other bigger themes as well. It's called, the one from Scotland is called Nancy Whiskey. So low. And thank you to Farhan for the loan of the keyboard as well. I'm a
पिंज पिंज मैं हूँ बनावा पिंज पिंज मैं हूँ बनावा काट काट के धागा धागेगी बनवावा उड़ेगी ना पहचाना मैं हरदम कत्या करूं तेरे नाम करूं मैं हरदम कत्या करूं I'll get back to the clouds and read them finally make the shuttles fly I'll let more the clouds and read them whenever I did in my roving way whiskey, whiskey, Nancy, oh come all you weavers, you clouds and weavers come all you weavers, wherever you be beware of whiskey, Nancy, whiskey she'll weave you as she would me whiskey, whiskey, Nancy, oh Whiskey, Nancy, oh Whiskey, Nancy, Sarah Kazmi, Sarah Hayes, everybody, please give them a huge round of applause. Akbar, Natiq, Afshan, Sajjad, just keep applauding. Kishwar, Naheed, Gerry, Cambridge, Carruth, Dr. Khalid, John, Vicki, husband. Thanks a lot to the sound engineers for making this all happen. Thanks to the Horror Literary Festival, the British Council, the Edinburgh International Book Festival, and thank you for being here. We didn't expect to be running so late. We didn't expect to be in this room. A year and a half ago, we didn't expect to be at this festival. We're very, very happy to be here, and we were happy to see you.